बाइक लेके आया वही वाली उसका नाम चल रहा है यार अपना ए भाई, सपने तो दोनों आंखें देखती हैं ना। और तेरी दूसरी आंख कौन है? मैं तो हूँ। मैदान में जाएंगे, झंडा गाड़ेंगे और सबकी फाड़ेंगे। यहाँ के कानून हमारे हैं और कायदे भी। You're married to the game now, so please be loyal in this relationship. Welcome to Maidan. ready for the ride. Aditya Datt, the director of the movie, ladies and gentlemen. And of course, the producer, Abbas. Welcome. All right, so here they are, the most handsome men, and of course, अब कुछ stage पे आग लगाने के लिए we have the most ravishing, ladies and gentlemen. She's super beautiful, the gorgeous Nora Fateh. You'll have to make some noise for her. Abbas Sayyid Sahab हमारे साथ हैं, producer साहब, please we'll start only once you are up here with us. The team of Crakk. जीतेगा तो जिएगा. Okay, there is so much to talk about. We'll start the event. लेकिन उसके पहले क्या हुआ है कि विद्युत भाई, I know this is like out of the blue and यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता है जब ये कमाल की टीम होती है. मैं चाहता हूँ आप सबको यहाँ पे वेलकम करो एक बार and अपने दिल की बात बताओ before we play the trailer here. It's like ये कहाँ से तू बोल रहा है अचानक? दिल की बात बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा. संक्षेप में बता देता हूँ. आज गाड़ी में था और मैं मन में सोच रहा था कि कई जर्नलिस्ट आएंगे हर बार की तरह और मैं हर बार बोल नहीं पाता हूँ. सो जो आपके दोस्त नहीं आ पाए हैं, जिनको आप जानते हैं, उन तक मैसेज पहुँचा देना कि यू बीन वेरी काइंड टू मी ऑल माई लाइफ एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी. मेरी बहुत इज्जत है आपकी. And as you said, sir, बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है. मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि please be देखा है. Yeah, that's what we were waiting for. We've seen the teaser, we've seen the songs, we've already loved the songs. दिल झूम हो रहा है हम सभी का. आदित्य साहब, मतलब कमाल कर रहे हो आप, जो ये कमाल की कास्टिंग की है, जो इतने अमेजिंग लोगों को साथ लेके आए हो. Now, ladies and gentlemen, without any further ado, of course, the moment is here when we'll take a look at the trailer of this sports action extravaganza जिसका नाम है क्रैक. जीतेगा तो जिएगा. All eyes on the big screen. Come on, हो जाए. Ladies and gentlemen, and of course the exchange of fist bumps here. I could see that, you know, मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है. Of course, तो जिस चीज का हम सबको इंतजार है उसी को करते. Let's invite on stage the very handsome, the producer of this film, who is also one of the bestest martial artists in the world. One of the bestest, छोड़ दो, he is the bestest. Give it up for Vidyut, Jammwal, ladies and gentlemen. वेलकम भाई. एंड एक चीज बता देता हूँ, ये अलग
से he's so against all this तारीफ, you know, he's so against it. नितिन नहीं बोलना है, ये सब नहीं बोलना, मैंने कहा नहीं, मैं तो बोलने वाला हूँ, because of course नहीं तो यहाँ लोगों के दिल टूट जाएंगे, है कि नहीं? All right, with him, I don't know, इनका better half बोलूं या क्या बोलने वाला हूँ मैं यहाँ पे. Face off बड़ा तगड़ा दिख रहा है. He is this amazing heartthrob जिन्होंने रैंप पे आग लगाई है, एक बार नहीं 50,000 बार, बड़े पर्दे को जला के खाक कर दिया, एक बार नहीं 50,000 बार. Give it up for Arjun Rampal, with all that bad boy energy this time on the big screen. बड़ा प्यार नजर आ रहा भाई ये तो यहाँ. नहीं मैं तो ऑन स्क्रीन देख रहा हूँ, वहां जो हो रहा है यहाँ पे बड़ा प्यार दिख रहा है. एंड नाउ प्यार की बात चली है, सो इट्स ओनली फेयर कि उनको बुलाया जाए जिनसे हर कोई, हाँ तुम कर लो, अरे मौका मिल रहा है यार, समझ नहीं रहा, धड़क कर रहा है. Give it up for the very gorgeous Nora Fateh, ladies and gentlemen. Don't make some more noise. Crakk की बात हो रही है, the entire nation is cracked for her. Wow, welcome Nora, welcome. The person who's backed it with this gentleman here, he's been with him, I don't know कब से, बड़ी सारी बातें वो भी मुझे उनके बारे में करनी है. अब्बास सैयद साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, प्रोड्यूसर साहब, ladies and gentlemen. And स्क्रीन पे इनके अलावा एक और इंसान है जो कमाल धमाल कर रहा है, जिनके साथ मिलके झंडे गाड़ने की और सब कुछ करने की बात हो रही है. Ladies and gentlemen, the very talented अंकित मोहन के लिए जोरदार तालियां. बहुत सारी बातें हैं. Of course, the superstar status, the most amazing people here on this stage. खूबसूरत सा बॉन्ड है, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, मैं सबको यहाँ पे, we'll get some chairs, but before that, only for your convenience, can we have a quick photo op with the entire team and then इसको आगे बढ़ाते हैं, okay? मतलब यहाँ सब लोग जानना चाह रहे हैं, what is Crakk for you? क्या चल क्या रहा है? क्रैक को मैं बहुत पॉजिटिव कॉन्नोटेशन देता हूँ हमेशा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे बोलते हैं ना, बंदा पागल है, जो पसंद आता है वो आदमी. मेरी माँ क्रैक है, क्योंकि जब मैं सुबह शूटिंग ले जाता हूँ 5:30 बजे उठ के, और उस दिन एक्शन की शूट होती है, वो पूजा में बैठ जाती हैं, और जब तक मेरी शूट ख़त्म नहीं होती है वो बैठी रहती हैं. फिर शूट ख़त्म होती है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि हो गई उनकी पूजा ख़त्म. वो होता है क्रैकपन, सारे दिन पैशनेटली किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना. मेरे यहाँ पे एक दोस्त भी हैं जो कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हैं. ही लीव्स इन द मॉर्निंग अराउंड 9. 3 साल का बच्चा है, रात को वापस आती हैं और उसको प्यार देती हैं. वो भी क्रैक है. सो क्रैक हर आदमी है जो पैशन के साथ कोई चीज़ के पीछे पड़ जाए, और जब उसको मिल जाता तो लोग कहते हैं जीनियस है. सो दैट्स व्हाट क्रैक इज. एवरीबॉडीज क्रैक इफ दे फील लाइक बीइंग इट. Amazing, हम सब क्रैक हैं, I'm sure इसके बाद सब यही बोलने वाले. Of course, we are crack for good cinema. किसको नहीं चाहिए? अभी आप मेरे को ये बोलो, raising the bar high every single time. What is it? Like unstoppable is the word that goes really well with you. क्या हो रहा है? मतलब खुद से competition चल रहा है, चल क्या रहा है? मुझे लगता है हर आदमी वही करता है, हर फील्ड में हर दिन अपने से बेहतर करने की कोशिश करता है, और हर आदमी करता है, मैं भी कर ही रहा हूँ. दूसरों को मौका तो दीजिए वहां तक पहुंचने का, उसके बाद आगे और बढ़ाइए. you're already there and हर दिन कुछ अलग हो रहा है. विद्युत जम्वाल साहब के बाद of course the heart throb जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, कब से देख रहे हैं, हर बार you've reinvented yourself with each and every role of yours. We love you. लेकिन यहाँ पे ये जो बैड बॉय एनर्जी लेके आ रहे हो ना आप, और ऐसे देख रहे हो, मुझे डर लग रहा है. अर्जुन रामपाल साहब, no seriously, the look in those eyes, what do you have to say? यहाँ पे, and of course working with this gentleman here and this amazing team, how was it? Firstly, a very good afternoon to everyone. Thank you for coming. It's a packed house out here. And कैसा लगा आपको हमारा ट्रेलर? So that's really wonderful. It's been incredible journey. ये जब फिल्म आई थी मेरे पास, इसकी मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा. It came to me from a friend of mine, पराग सांघवी. वो शायद ऑडियंस में बैठे हैं कहीं, वो कहीं इधर बैठे हैं ऑडियंस में.
He's very close to Vidyut and he's very close to me. और उन्होंने कहा था कि विद्युत एंड यू हैव टू डू अ फिल्म टुगेदर और मैं एक फिल्म लेके आ रहा हूँ, ये पिक्चर आपको करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली पराग स्वामी का जो स्क्रिप्ट सेंस है इज़ नॉट दैट ग्रेट. और मैंने बोला कि दोस्ती यारी में मैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलता था लोखंडवाला में. ओके बिफोर आई टर्न अ मॉडल ऑल्सो मैं इसको ना नहीं बोल सकता हूँ इस फिल्म को. तो मैं बोला यार मैं तो फंस गया हूँ अभी ये कौन सी फिल्म आ रही है मेरे पास. एंड ही गॉट मी दिस यंग मैन आदित्य दत्त होम एंड ही सेड सुन ले एंड आई लाइक सुना दे. Aditya was not ready. I actually thought we were just going there to say hi, hello, and we'll do a narration after like 1-2 days. That's what I thought. When he narrated to me the subject, and he told me how Vidyut and him had kind of planned it, every action scene, every detailing, I was just blown away. I was surprised. Or you know, I've been in the industry now for more than 2 decades. To get a surprise and to find something so refreshing. Was really fantastic. So thank you Parag for making this introduction and making me think, and thank you Vidyut and Aditya and Abbas for having me on this film, because it really made me push myself to an extreme level. And Crakk, if you ask me what it is for me, is cracking all my bones while making this movie. And you know, already there's so much speculation कि वो climax कैसा होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे. That is something that the entire world is talking about अभी. और वो जो आप एक सीन में चिल्लाते हो ना, ऐसा वो जो expression आ रहा है, kill कर रहे हैं आप लोग. Let's just wait for the movie to release. Nora, this one's for you. Please tell us, you know, leading lady, and here in this action sport drama, which is exceptional. कैसे हुआ and why did you say yes for this movie? First of all, everyone, hello. Hi. And thank you for coming. मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? क्या बात है? Love you too. अभी 2 मिनट पहले तो एमी बोल रहा था, अब नोरा को देख के नोरा बोलने लगा. Okay. हाँ? क्या बोला? Acha, okay. To answer your question. So, it's actually a very funny story. है ना, sir? I was the last one to come on this film. Like एकदम last minute में. And I was on my way to OT. And you know, when you go to OT, you're driving up those hills, right? और बिल्कुल network नहीं है. So, sir had just called me to narrate the film. We did a Zoom narration. We did a Zoom narration, WhatsApp. And the network just switched off in the middle of the narration. And I'm like, hello, freaking out. calling, switching off, calling, switching off. I said, yaar, kya luck hai? I'm getting a lead role and a narration's happening and I don't have network. So I was panicking, freaking out. Eventually, when I reached my destination, called him, gave me the full narration. I said, sir, of course I want to be on board. I think not only is the cast superb, but the level of what they were trying to attempt and their vision was It's been 4 years that I was writing the script. You guys were back and forth writing, I don't know the number of drafts. And every action beat that you guys साथ खेलने में बड़ा मजा आता है. I don't know for what reason. He is just amazing. He's a visionary and इस फिल्म को direct किया है, जिस तरह से present किया है. Aditya Datt, ladies and gentlemen. The man who planned this Crakk. उनके मन में भी बड़े सारे questions होंगे, so yes, moving over. बात कहना चाहूँगा. एमी जैक्सन यहाँ पे है नहीं, मैं उनके बेयाब में बोलूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की. काफ़ी टाइम हो गया था, मैं हिंदी फिल्मों में नहीं आई थी, मगर मैंने आदि सर के लिए पूरे डायलॉग याद किए, एक्सप्रेशन समझे और इमोशन समझे. इट वाज नॉट इजी, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लव मी मोर देन यू लव मी इन द पास्ट. ज्वाइन जल्दी ही करेंगी वैसे हमें. थोड़ा सा उनका गला खराब होता तो ऐसी आवाज आ जाती. फिलहाल के लिए मूविंग ओवर टू यू गाइस. जी, कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Vidyut, to your center. Nikita, you're from India Forums. Guys, the trailer is Crakk. We loved it. Vidyut, my question is to you. This is your second production film. The scale looks huge.
And as an actor, batting on yourself with such a huge production, how did you bring all of this together? पहली बात तो ये, you gotta bet on yourself because you should be the first one to bet on yourself. Just do it. And we've actually shot it. So when he saw the first shot when Vijay did that, he came running back. Okay, we shoot. He can do it. But yeah, we're hoping to show you the BTS someday and how it was actually there on location, because all the foreigners and the crew was very supportive, but they were just going crazy because they had to block the bridge down. We had to stop all the traffic, and it was not an easy process to shoot it abroad, especially. Right. Thank you so much. ऐसे थोड़े बोलते हैं क्रैक. बिल्कुल सही बात है. And of course we have to talk about the character. जिस हिसाब से character में घुस गए हैं. 100%. So, if I may so say again, we've always seen Vidyut doing, Commando, Khuda Hafiz. There are all these characters which are little within them. They're a little more calm, stated. When they say their lines, they're very said in a certain tonality and a calmness, So when I wrote the script, I remember first reaction of Abbas or someone in the office saying, this is not sounding PJ, this is not sounding Vidyut, because they know him so much. They're like, how will he play this? And I said, I spent 3-4 years with him. Trust me, this is Vidyut, which you've not seen on screen. This is when you put the camera off, this is Vidyut. When he comes on for the characters like Commando, Khuda Hafiz, IB, they're all these officers, so he's always this straight face, calm. So, and that's what the audiences usually used to see him do. And I was like, no, I don't want to bring that. They've already seen it. We've got to bring something new on screen. And that's where, that's how Crakk is. And like I said, Crakk is PJ. Something new on that big screen. We have Arjun Rampal, Vidyut, Jammwal, Nora Fateh, सब एक साथ. I think ये सबसे कमाल की casting है. सबसे पहले तो यहाँ पे एक बार जोरदार तालियां बनती है for this team. And of course, talking about the cast, the amazing cast. अंकित, भाई बनना कैसे लगा इस कमाल के इंसान का, and क्या-क्या सीखने मिला? सबसे पहले तो आप सबको बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सब ट्रेलर के साथ सबको पसंद करने के लिए. तो मेरे सिलेक्शन की थोड़ी एक स्टोरी है, लंबी है, वो फिल्म रिलीज होने के बाद मैं बताता हूँ. बट मैं अपना जो थैंक्स है वो 3 पार्ट में करना चाहूँगा. पहला थैंक्स मैं आदि सर को और अब्बास सर को करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब मेरे बोलते हुए भी मैं शिवर कर रहा हूँ कि भाई का बड़ा भाई, मतलब ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था. मतलब दिल्ली से जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा था तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा. तो उस काबिल समझने के लिए थैंक यू सो मच सर. और दूसरा, दुनिया के सबसे मेहनती इंसान के साथ फ्रेम शेयर करना, मतलब मुझे लगता है किस्मत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, बट उसके पीछे की मेहनत को देखना और एडमायर करना ज़रूरी है. तो मैं भाई से IB71 के टाइम पे मिला था, बट शायद मेरी किस्मत कुछ अच्छा जानती थी, इसलिए मेरे को क्रैक का हिस्सा मैं बना. तो 15 साल में 10 साल की जो मेरी मेहनत है, शायद वो मुझे यहाँ तक भाई के पास लाके खड़ा कर पाई है. और जब मैं पहली बार मिलने गया तो मैं ऐसा लग रहा था, मैं फूल ही नहीं समझ रहा था. जैसे कोई लड़का किसी सुंदर लड़की से रिश्ते के लिए मिलने जाता है ना, तो ऐसे गदगद हो जाता है अंदर से. तो मैं ऐसे शिवर कर रहा था, तो मैं भाई के लिए एक छोटा सा हनुमान जी लेके गया था, क्योंकि मैं भाई को बहुत मानता हूँ. और तीसरा थैंक्स मैं करना चाहूँगा ऑफकोर्स माता पिता का, क्योंकि घर से दूर रहना, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ रहना. सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया. And that's what you see now. It feels nice. Thank you. Congratulations team for such a super मैगजीन. मेरा सवाल अर्जुन आपसे है. आपके नेगेटिव किरदारों की अगर बात करें तो उस पर काफ़ी काम आप करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए नजर आते हैं. यहाँ पर भी हम देख रहे काफ़ी वक्त बाद हम आपको सिनेमाज में देख रहे हैं, अलग अंदाज में, अलग अवतार में, और आपने कहा कि काफ़ी बोन्स भी आपने क्रैक किए फॉर दिस रोल. क्या कहेंगे इस अंदाज से वापसी करना, क्या कुछ रीजंस रहे, क्या कुछ एक्साइटिंग लगा आपको फॉर चूजिंग दिस प्रोजेक्ट? I think वापसी करना एंड ऑल कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट क्योंकि मैं कहीं गया नहीं था.
मैं बड़े आराम से अपने फिल्में चूज़ करता हूँ और सोच समझ कर चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कि अगर आप जल्दबाजी करते हो स्पेशली फिल्म चूज़ करने में तो ज़्यादा करके आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। और जब ये फिल्म आई थी तो मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ है जो हम ला सकते हैं। एक एक्शन फिल्म में इतना इमोशन लाना आसान नहीं होता। आई थिंक देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आदित्य कुड ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशन टू दिस कैरेक्टर, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वही नहीं कि अगर बस एक नेगेटिव कैरेक्टर हो या एंटागनिस्ट हो या विलन हो जैसे हम कहते रहते हैं हमारी फिल्मों में। आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशंस टू गिव टू अ पर्सन। वो भी एक इंसान होता है, उस इंसान के भी इमोशंस होते हैं। उस इमोशंस को किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी फ़िलासफ़ी क्या है, वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए। उसकी क्रैकिंग पॉइंट क्या है कि जब आपका ये जो फिल्म है क्रैक, इट्स नॉट जस्ट क्रैक बिकॉज अच्छा बंदा क्रैक है, ये पागल है, वो नहीं है। There's a cracking point to every character, which I saw in that script, which I really, really enjoyed. And I saw the cracking point to my character, a cracking point to Vidyut's character, a cracking point for Nihal's character, you know, a cracking point for other characters within the film, for even Nora's character, wo jab jud jati hai in the race. So there's a cracking point there for everybody. But to find that emotion, I think was very important for me. और उसके लिए हम साथ में बहुत बैठे थे। ये आजकल मैं गोवा में रहता हूँ तो इनके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती है मुझे आके मिलने के लिए। तो ये आए थे घर पे, काफ़ी बैठे हम एंड we spent days together कि ये what would be the philosophy, and I think वो एक बात है which comes up. This guy has his own ambitions. He believes कि वो right है। जो कोई गलत भी कर रहा है उसको नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ, उसको तो लगता मैं सही कर रहा हूँ, आप सब गलत हो। जब आप पिक्चर देखोगे होपफुली आप मेरे साइड पे आ जाओगे। थैंक यू। वेल डार्क साइड। अगला सवाल अंकित आपके लिए। टेलीविजन हो, मराठी सिनेमा हो, हर जगह हमने आपको देखा है। अमेजिंग तरीके से आपने अपने हर किरदारों को निभाया, और अब इस ट्रेलर में जिस तरह से हमने देखा, क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड है आप? अपना जो एक लंबा ग्राफ जो हमने आपको देखा है, आपका ग्रोथ देखा है, व्हाट यू टू से अबाउट दिस फेज? किस तरह से, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी हार्ट रेट मेरी एक्साइटमेंट बता सकती है वैसे फिलहाल, बट ऑफ कोर्स जब कुछ बड़ा होता है लाइफ में तो वो किसी वजह से होता है, और इतनी बड़ी जगह पे इतने बड़े लोगों के साथ बैठना अपने आप में एक अचीवमेंट है। और इतनी बड़ी ऑडियंस, द क्रिटिक्स, एवरीवन फॉर दैट मैटर ओनली एक्सपेक्ट्स द बेस्ट फ्रॉम यू। मैं खुश हूँ कि उनको उम्मीद है कि मैं सिर्फ अच्छा करूँ और बहुत अच्छा करूँ। जब ऐसा होता है तो आप एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा, आपको भी लगता है कि अगर कुछ पागलपन करूँगा हो सकता है इनको ये पसंद आ जाए। सो आई एंजॉय पुशिंग द बार, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट दैट दिस इज व्हाट्स टू बी डन एंड आई एंजॉय इट। थैंक यू। Hi, you're this side in the center. Hi, Nora. My question goes out to you. Nora, in the trailer we have seen that you're playing the character of an influencer, and right now influencers are taken over. They are ruling. So, what do you have to say about that? What is your opinion, and what were your preparations for the same? What's my opinion about influencers? Yeah, they are ruling right now, and of course, what were your preparations for your character? Definitely, yeah, you're right. It is an era of influencers now. I think, you know, a lot of them have become stars in their own right. The kind of numbers they garner, the reach that they have. And it's quite exciting because I feel like the Gen Zs now have a different way of looking at careers, per se. A lot of them just, we used to grow up and say, oh, we want to be like a lawyer, engineer. Now it's like, you know, a 12-year-old girl or a boy will be like, I want to be an influencer. And it's actually a real job and people make a lot of money out of it, but it's not an easy job. You have to have a personality. Not just anyone can be an influencer. So with this role, I understood that
Alia, because my character's name is Alia, she had to have a bubbly personality, it had to stand out, and it had to grab people's attention, the audience's attention, and that's what influencers do essentially. Hi Vidyut sir, on your right, Samir here from Movie Talkies. Sir, there's always a debate on social media about superstars not being able to perform the real stunts and all. And you have that, you're one of those rare actors who have that image of the real action star. So, you know, when it comes to, like, not every superstar gets it. So, what do you look at this? How do you look at this, you know, this debate on social media? सही हर आदमी हर काम थोड़ी कर सकता मगर वो जो कर सकते हैं मैं नहीं कर पाता हूँ जो हिरन कर पाता है वो शेर नहीं कर पाता जो शेर कर पाता है वो हाथी नहीं कर पाता ये हर जगह के राजा हैं सो हर आदमी अलग काम करता है कई लोग ये करते हैं And also people you know compare our then you should shoot it तब तक एक्शन डायरेक्टर जा चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा सो कोशिश तो कर रहे हैं पूरे इस चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे अरे बाबा कमाल हो गया बोलेंगे तो सही I hope ये वाला सीन भी उतना ही वायरल हो जाए होएगा We'll take one more question. Yeah. Hi Arjun, Jai here from Bollywood now. I just wanted to ask, how do you manage to make this difficult stunt look so seamless? What stunt? The stunt we have seen. Okay, I mean I've tried to do mostly all my stunts in the film. It's been I think one of the most physically challenging films. पहली बात तो बोल दिया था कि ठीक है ये सब एक्शन होगा it'll be so amazing we'll do this do that and you feel okay I'll be able to do all of that you know but when you hug a Vidyut and you feel these muscles which you didn't even know existed in certain bodies and I'm quite a fit guy but I was like अरे ये कौन सा जानवर है you know I had to really up my game on that department. It's not only that, it was not only just Vidyut. I think Vidyut and Aditya together had also selected this fantastic group of athletes from all over the world, okay, who come and are actually part of my this Maidan, the place where this whole contest is going to take place. Those guys, my God, they were fantastic. I was so inspired and in such awe in this movie, watching all these people do their things. So I had to constantly push myself. I had to constantly say, "Nahi, mujhe wapas karna hai. I have to do it. I have to do it." And in that process, I did slip a disc or two, and I was laid up in bed. And they were very kind to cancel shoot for a good 2-3 weeks till I could recover and come back and finish the sequence. But yeah, we had to do it. And on the last day, Vidyut didn't leave me there also because the disc that had got repaired, he displaced it again. So I had to go back into the hospital. So that's how we are and that's how Crakk was. And I don't think I would change it for anything, but I don't know if people really get opportunities. आप पूछ रहे थे कि you know Hollywood में लोग अपने stunts करते हैं या क्या कभी मौका ही नहीं मिलता जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के सारे एक्शन डायरेक्टर्स आए थे they were all fantastic इसलिए आए थे मगर मज़ा तो तब आया जब हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर आए थे हमारे सेट पे और जब हमने तब एक्शन की जब रवि वर्मा आए थे I think that was the really fun part of it अब चलो यार अब घुसे मारो you know कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है तो you know India is up there and we are doing very well and trust me जितना हमको मिलता है उसके अंदर जो इन्होंने किया है इस फिल्म में वाकई कमाल का है नूरा आप रोल रेस के साथ एंड स्पीड के साथ लाइक वेरी फास्ट एंड हम एक कंस्ट्रक्शन साइट में थे ना बस यू कैन इमेजिन कंक्रीट कैसा है इतने सारे पॉट होल्स हैं एंड जब मैं कनाडा में थी बचपन में मैं हमेशा रोलर ब्लेड्स कर रही थी बट इट वाज लाइक नाइस streets, no potholes, nothing. तो यहाँ पे इतने सारे cracks है, इतने सारे potholes है, and sir बोल रहा है कि please तेज से जाना है roller blades के साथ. I'm like तेज से इतने सारे potholes, how? It's not possible. So I said, chalo, let's just do it, you know, because Arjun sir is doing his stunts, Vidyut sir is doing his stunts. तो मुझे भी करना चाहिए. Vidyut is also वो भी कर रहा है अपना stunts. So I'm like मुझे भी करना है. I didn't want to look like नहीं मुझे stunt double चाहिए. So I was like चलो करते हैं. So we're going with speed, ta 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 ta, and then suddenly
I just fall. Oh, उसके ऊपर क्या है? हमारे बीच में एक rope है. Okay, so he's got a rope on his waist. मेरे waist पे rope है, and he's going and I'm going. Full speed में जा रहा हूँ, full speed में जा रहा हूँ. Boom, 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 boom. Then I fall. So when I fall, he doesn't know that I have fallen. So he's going. So he's dragging me with speed. So I have been dragged across this whole concrete area, and I'm like. One thing, no, a martial arts guy knows everything. उसको सब पता है कौन गिर गया है, कौन किधर है, उनके पीछे. It was so. Oh my God. मैं चिल्ला रही थी, फिर उसने रुका, and he's like, oh my God. पूरा पीछे ना glass. And we all were very concerned if we got the shot or not. Yeah, I know that because you're like, it's okay, shot मिला है, it's fine, Nora, thank you. And I'm like, call a doctor. मैं पीछे था स्टेज के और मुझे आदित्य दत्त ने एज अ डायरेक्टर पूछ ही लिया. वो अर्जुन भगाता हुआ गया था गाड़ी को, तुम क्यों नहीं गए? ये पीछे बैठी थी, गिर सकती थी. और इनको चाहिए कि एंट्री जब आप लोगों के सामने आया तो फुल स्पीड में आओ, इसीलिए धीरे गया था. And also to add, when I got hurt, I wanted to act कि no, मैं भी Vidyut की तरह हूँ, it's fine, I do my own stunts, so I got up, I'm like, I'm fine, everyone's running, ma'am, I'm like, I'm fine. But I was not fine, I cried in my vanity like a baby. लंबा चौड़ा अपने आगे कि इसको मत करना, प्रोफेशनल्स ने किया है. What if we want to do the same thing? कहाँ जाके करें, कैसे करें? मत करो, मन करेगा तो करिए. बट मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है. मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अगर कुछ भी डालता हूँ जो थोड़ा अलग हो, I never write do not try this at home, क्योंकि अगर घर पे ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे. और जो घर पे अक्सर ट्राई करते हैं वो अक्लमंद होते हैं. ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता है कि छलांग मार देगा. हर आदमी में एक क्षमता होती है. अक्सर हमें लोग रोक देते हैं और वो डर हमारे अंदर आ जाता है. मुझे ऐसा लगता है. उसके अलावा मैं गेमर हूँ. मैं पिछले 15 साल से गेमिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें मैं देखता हूँ. एक बिल्डिंग से छलांग मारी, कैसे मारी, मैं बचपन से मुझे आई रियली एंजॉयड. और फिर एक वो होता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम. So gaming करते करते about 8 years back, I met these 2 young boys. One was 13 and one was 14. And वो मेरे घर आए थे एक पार्टी में किसी के साथ और वो गेमर्स थे. So उनके थ्रू मुझे पता लगना शुरू किया कि यार ये तो बहुत फिजिकली डिमांडिंग गेम है. अगर आप कभी VR मशीन में बॉक्सिंग करेंगे आप हैरान हो जाएंगे. Similarly उस दौरान मेरी मॉम मेरे साथ रह रही थी and she was certain age. मैंने रियलाइज किया इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं. So I started making her play a game and I realized कि उनके reflexes तेज हो गए because after a certain age. So ये सब जब मेरे दिमाग में आया and I started enjoying the physical aspect of it कि आप कई चीज़ें सीख सकते हैं बिना किए हुए. So मैंने लड़कों के साथ मिलके एक गेमिंग कंपनी शुरू की which has been running for 2 years and with Crakk we are launching the first game that is called the Crakk the Run. क्योंकि आप घर बैठे एक और इम्पोर्टेंट बात है. आपको पता है मेरे कई दोस्त हैं, पास करना पड़ेगा फिजिकलिटी का. Is it cool? More than what I did in the film? नहीं, actually वो तो बहुत ज़्यादा किया. But मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा because I would like you to come and play it, try it. Whether you played, I want to see your genuine opinion of a game. ठीक है, done. अर्जुन मेरे साथ कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ. और आप सब जिसका भी मन है प्लीज आइएगा. I've invited a few gamers just randomly. उनसे भी तो पूछा जाए कैसी लग रही है उनको गेम. So you're welcome all of you. We'll quickly step out and enjoy the game with this amazing team here. और साथ ही carnival हो रहा है, Crakk Carnival for the first time. The entire cast and crew is gonna get together. बहुत सारा music, धमाल, of course, live performances. ये आपको देखने को मिल सकता है 14th Feb. That's Valentine's Day. जाइए थोड़ा क्रैक पंथी कीजिए नोएडा में. And 19th Feb अहमदाबाद में with the team and BMS पे अपने tickets book कर सकते हैं. Thank you so much for being so amazing, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much. Do the solos. जीतेगा तो जिएगा. Please. मैंने से बोला मुझे बताया कर सवाल पूछने से पहले यार. But as I said, on screen, off screen, this man here, ladies and gentlemen, I think इनसे ज़्यादा organic इंसान इंडस्ट्री में नहीं है. तो क्वेश्चन बताने का मतलब ही नहीं था. Give it up for Vidyut Jammwal. और मतलब ये जो यहाँ पे ट्रियो है ना, इनको देख के मजा आ रहा है. विद्युत जामवाल साथ में अर्जुन रामपाल, इन दोनों की केमिस्ट्री देखें, वो फेस ऑफ जो हो रहा है वो देखें. और डू वी सी विद्युत एंड नोरा,